perfect. There is no right way to be a good mom or a perfect mom. Everybody makes mistakes. And before we start talking about क्या तरीके हैं बच्चों को हैंडल करने के, in my experience, I want to say that all of you are doing a great job as mothers. And it is okay sometimes to lose your temper. It is okay sometimes to feel like, oh God, I'm failing at it, और मुझसे नहीं हो रहा है, ये क्या है, बात क्यों नहीं मानता ये. उस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं सबकी लाइफ में होते हैं. And it's absolutely normal to face those moments. So I think I can start with one of the most common questions that I get asked as a mother is कि आप काम और बच्चों को साथ में कैसे हैंडल करते हो, करेक्ट हनिका? काम और बच्चों को साथ Yes, में कैसे कैसे हैंडल करते हैं? सो दिस इज समथिंग. yes, right. So, Chhavi, let's start with how to manage work and children along with their stress and anxiety fears. Yeah. सो व्हाट हैपेंस इज कि एक चीज होती है मॉम गिल्ट, जो वर्किंग मॉम्स को बहुत ज्यादा होती है. कैन यू टेल मी, आप में से लाइक जस्ट रेज योर हैंड, कौन कौन वर्किंग है और कौन कौन लाइक हु आर वर्किंग? या सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू वर्किंग मदर्स. तो ऐसी फीलिंग आपको होती होगी, कनिका एंड आई कैन सी ममता अग्रवाल, ऐसी होती होगी फीलिंग कि मुझे काम करना है बट माय चाइल्ड नीड्स मी. तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, हैंडल कैसे करूं? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारी वर्किंग मदर्स फेस करती हैं. आई ऑल्सो फेस दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स. कभी कभी आपके पास इतना you have the freedom to manage your time like that कि आज आप काम को प्रायोरिटी ना देकर बच्चों को प्रायोरिटी दें या वाइस वर्सा. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो लग्जरी हमारे पास नहीं होती. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी that your work is also important because you are an individual before you are a mother, right? आप जो हैं वो आप पहले वो बनी, उसके बाद आपने माँ बनने का स्टेप लिया. So don't forget that. And just because you're a mother now doesn't mean you cannot be anything else. This is your primary job. Don't think like that. That is what gives rise to mom guilt. Don't think like that. Now coming to time management. So what has really worked for me, I have two kids, and what has really worked for me is कि अगर बच्चों की रूटीन सेट कर दी जाए, अगर बच्चों का एक को एक रिदम में डाल दिया जाए, मतलब इन अ वेरी क्रास term, it would be a kind of a timetable, but not really a timetable. What I'm talking about is putting them in a rhythm. यानी कि सुबह सूरज के साथ वो उठ रहे हैं, फिर उसके थोड़ी देर के बाद वो ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करें, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज योर चाइल्ड इज. Okay, so if the child is a newborn or is the child school going or या फिर प्री-स्कूलर है या थोड़ा बड़ा है, उस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने बच्चे की लाइफ में एक रिदम बनाएंगे. और अगर आपके बच्चे की लाइफ में एक रिदम आप बना देंगे, तो उससे 2 फायदे होते हैं. एक तो ये कि छोटे बच्चे जो होते हैं स्पेशली, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट दैट दे वांट, व्हाट इज़ इट दैट दे नीड, दे जस्ट गेट क्रैंकी. हमने देखा ही है, दे जस्ट थ्रो अ टैंट्रम और हम भी परेशान हो रहे हैं कि इसको चाहिए क्या, समझ ही नहीं आ रहा है. भूखा है बच्चा कि नींद में है कि उसको बाहर जाना है, घर में बैठा-बैठा बोर हो गया, हुआ क्या? सो इफ यू हैव अ रिदम, यू नो कि अभी इतने बजे हैं, रफली इससे अभी भूख लगी होगी या नींद आई होगी. सो यू नो दैट इज़ व्हाई ही इज़ थ्रोइंग अ टैंट्रम. तो एक तो ये चीज़ होती है कि बच्चे को आप हैंडल बेटर कर पाते हैं. और दूसरी ये चीज़ होती है दैट व्हेन यू नो व्हाट योर चाइल्ड्स टाइम टेबल इज़, यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल एज़ पर दैट. दैट राइट नाउ these are the number of hours my child is going to sleep, whether you're working or you're not working. Homemakers तो मुझे लगता है वर्किंग वुमेन से भी ज़्यादा बिज़ी होती हैं कई बार, क्योंकि घर का भी ख्याल रखना है, सारा काम, साफ-सफाई का भी ध्यान रखना है, खाना बनाने का भी ध्यान रखना है, सबकी पसंद का खाना हो वो भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, बहुत काम है, राइट? तो अगर आपको ये पता है कि मेरे बच्चे का ये रूटीन है, तो उस हिसाब से आप अपनी रूटीन भी बना सकती हैं. एंड आई थिंक फॉर वेदर यू आर अ चाइल्ड or whatever age you are, if you follow a rhythm in your own life also, everything falls into place. इसको बोलते हैं circadian rhythm, यानी कि सूरज के साथ आप सुबह उठो और सूरज के साथ आप सो जाओ. This is a rhythm that your body follows. If you try to follow that rhythm, जल्दी सो जल्दी उठो, मोस्टली हम लोग दिन भर काम भी रहते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम भी सब अच्छा रहता है और हमारे सारे काम निपट भी जाते हैं. सो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट हैज अ लॉट टू डू विद
how you manage first your child's time, then your own time, as per the rhythm of nature. कुछ सवाल इसके बारे में? नहीं, कोई सवाल नहीं। मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि किसी को कोई सवाल ही नहीं है। ओके, हनिका, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग? All right. So our next question is, हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन और एंड हाउ टू गेट योर चिल्ड्रन लिसन टू यू। हम लोग आई थिंक हम सभी इस सवाल के साथ में जूझते हैं, किस तरह से अपने बच्चों से अपनी बात मनवा सके और उन्हें अपना जो हम चाहते हैं वो फॉलो करवा सके। और एंड दूसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनसे किस तरह से डिसिप्लिन उन्हें कर सके। छवि, इफ यू कैन शेयर योर व्यूज ऑन दिस। या सो सबसे पहले तो मुझे बताइए, आप सारी जो मदर्स यहाँ पर हैं, व्हाट इज योर एज ग्रुप? मतलब 30 के आसपास होंगे आप, प्लस माइनस, या नहीं 20? ज्यादा बोल दिया। Please feel free to unmute yourself and ask questions. 40 plus. 40 I'm ठीक है। 40 plus. ओके, 43. वेरी गुड। तो अब 45 plus. मुझे बताइए, आप में से कितने लोग सुनना सीखे हैं अभी तक, कि हमने उसकी बात सुन ली? ऐसा नहीं होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई एम आल्सो 42 इयर्स ओल्ड, लेकिन हमेशा हम हर किसी की बात नहीं सुनते हैं। जैसे हमें लगता है कि हमें सब पता है, हम हमने भी सीखा है, हमें भी एक्सपीरियंस है, वैसे ही जो बच्चा है ना, उसको भी लगता है कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। आप 4 साल के बच्चे से बात करो, वो आपको बताएगा मुझे पता है। Right? Can you please mute yourselves? Please, Forum, if you can mute yourself and others. Yes. So एक बच्चे को भी लगता है, 4 साल के बच्चे को भी लगता है कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने तो ये चीज करी हुई है, मुझे पता है। या फॉर एग्जाम्पल, उसने एक दिन कोई दाल खाई, उसको अच्छी नहीं लगी, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो पता है, मुझे तो एक्सपीरियंस है दाल खाने का, दाल तो बिल्कुल बेकार होती है, मैं नहीं खाऊंगा। यू नो सो सबसे पहली चीज, when you want to listen to your child, is to listen to your child yourself. आपका जो बच्चा है वो क्या कह रहा है? एंड इट्स ट्रिकी बिकॉज हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन तो भी जो बच्चों की लैंग्वेज होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। और अगर एक छोटा बच्चा आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, मतलब अगर आप ही उसकी बात नहीं समझ पा रहे हो, तो वो आपकी बात समझना तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, राइट? तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स लैंग्वेज बिफोर यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, एंड ट्राई टू कम्युनिकेट विद द चाइल्ड इन हिज और हर लैंग्वेज, जो भाषा उन्हें समझ में आए। ऐसा मुश्किल होता है, लाइक मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि आई फाइंड माई सेल्फ एक्सप्लेनिंग टू माई डॉटर who's 10 years old that I'm really tired, I'm really exhausted, I need 5 minutes. It's a very simple thing to say. हमें लगता है कि इसमें क्या नहीं समझने वाली बात है, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से वो नहीं समझ पाएगी, क्योंकि मैंने ये चीज उसकी भाषा में बोली ही नहीं, मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में बोल दिया that I'm exhausted, right? So you have to make like I feel that I'm also a world of educator, and I feel going by the world of method of teaching, storytelling makes a lot of difference. जब आपको अपने बच्चे को कोई चीज समझानी है, create a story around it. I'm not talking about Cinderella and Snow White stories. I'm talking about stories from the real world, which are in a child's language. Not about suspense thrillers and not about murder mysteries, but stories which are simple and the child can understand. For example, you want to tell your child the importance of eating that dal, जो उसने decide कर लिया है कि अच्छी नहीं होती, मैं नहीं खाऊंगा। तो आप एक story उसको सुनाओ जिसमें दाल है, एक ऐसे बच्चे की, I'm just being creative that okay, there was this child once, he used to eat dal, and dal has a lot of protein and it has good carbs, so he got strong, and then he was going somewhere, one day he fell down and he didn't get hurt because he was so strong. So maybe you should try the dal again, or maybe this is just a way, depending on how old your child is, the anecdotes, the storytelling can come in that way. तो उससे बहुत फर्क पड़ता है. And disciplining the child is something which is difficult. But when you talk about disciplining your child, we often feel कि
हम तो पेरेंट्स हैं, हमें लगता है हम पेरेंट्स हैं, हमें सब अलाउड है. If you want, for example, if you want your child to pick up the plate खाने के बाद and put it in the sink, it is something you cannot teach him if you're not doing it yourself. और अगर आप रोज अपनी प्लेट उठाकर सिंक में रखते हैं या धोते हैं, your child is watching you, you will probably not even need to teach him that discipline. That is a simple discipline that he learned on his own by example, by just watching you, right? और कमरा साफ करना, for example. I personally find it really hard to ask my daughter to clean her room. But when you start doing it yourself, when you tell them ki, I go to her and I tell her, Ariza, your room is really messy. Can you clean it? Instead of saying that, if you just change the language a little and say, Ariza, your room is really messy. Come, let's clean it. And you involve her while you clean the room. And I'm telling you, chances are she will take the job from you and she will do it on her own. क्यों? क्योंकि उसको she's 10, so this is as per her age group. तो उसको पता है कि मेरी ये पेंसिल जो मेरी है ये यहाँ नहीं रखनी है, मुझे यहाँ रखनी है. मम्मा गलत रख रही है. So she will come and she'll say, no, not here. I'm going to put it there. Okay, this doesn't go here. This goes here. And that's how you inculcate that habit. But अगर आप ये बोलोगे कि clean your room in 5 minutes, I'm going to come back and check, and if it's not clean, then धमकी. तो empty threat जो होता है वो आपको भी पता है वो empty threat है. ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं दोगे रात को अगर वो कमरा नहीं साफ करेगी, और वो उसको भी पता है. So she'll understand, they understand that, okay, this is just an empty threat coming. Doesn't mean anything. So basically you lose your, your armor in front of your children. They know कि ये कुछ करने वाली है नहीं, मेरे जो मन में आएगा मैं करूँगा. So better to get your child involved into an activity and do it with the child so that the child also understands कि ये भी करते हैं, मुझे भी करना है, सब करते हैं. Also disciplining how you talk to people. I often hear people complain, parents complain that with slightly older kids who are teenagers, that they don't talk properly. They don't talk to me properly. They answer back. कुछ भी बोलो उल्टा जवाब, कुछ भी बोलो उल्टा जवाब. तो जो टीनेजर जो बच्चा है ना, एक तो teenagers are young adults. Again, if a 4-year-old can think I know everything, teenager to knows the whole world. In fact, in a lot of cases, teenagers today actually know more than us because they are more closer to the technology. They are more savvy with the phones and the gadgets. They can make us feel very overwhelmed कि हमको लगता है कि अरे हम शायद we've become old, we don't know this. So it's important that you respect the teenager in a way that they want to be respected. So you listen to their opinion. You listen to what they are saying. You reason it out with them like an adult. So they feel important. They feel like an adult. And you actually treat them like an adult so they can make an informed decision. अगर आपका बच्चा आपसे बोल रहा है कि मुझे रात को बाहर जाना है, for example, कि मैं I'm going to come back at 9 o'clock. 9 o'clock I think is very late for a 12, 13-year-old child. Or 10 o'clock. You are asking them कि कौन है, किसके साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, फोन नंबर दो किसी का, उसकी मम्मी का फोन नंबर दो, कौन अडल्ट कौन है आपके साथ, 50 सवाल आप पूछ रहे हो. तो तरीका होता है, आपने कैसे सवाल पूछे उससे. Are you involving them? Are you asking these questions as a friend because you care? Or are you asking these questions because you're the Hitler, you're the boss of the house? You're the mother. That tone makes a lot of difference, firstly. Secondly, if you explain to the child that, I am worried about you, sometimes an untoward incident can happen, which is why I just need to know where you are. ताकि मुझे पता रहे. So if something happens and if you need me, I can be there for you. Please take your time, have fun, and whatever time you're committing to come back at that time, because that is also trust building for me. So build my trust so that next time when you go out, I don't doubt you. आप 9 बजे बोल के जा रहे हो तो आप 9 o'clock आ जाओ. आप जहां पहुंच रहे हो एक बार कॉल कर देना. आप वहां से निकलते टाइम एक बार कॉल कर देना. There's no need to call me 50 times. Just have fun, be safe, be careful of these things, and slowly you can go out for longer. So you have a reasonable discussion with a teenager. They'll more often than not understand and also trust you enough to confide in you the next time for anything like that. And you, Hanika, I forgot to address the question of stress and anxiety in children. Yes.
So stress and anxiety in children is a very common thing nowadays. Surprisingly, आप मतलब बच्चे छोटे भी होते हैं तो भी उनको स्ट्रेस हो जाता है. और अगर आपका बच्चा आपको बोलता है कि मतलब बोलेगा भी नहीं, the point is that the child doesn't know the word stress. They don't know how to define it, what they are going through. As a parent, it is our responsibility to understand what they are going through. Right? तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा स्ट्रेस में है, तो अगर आप उसको, I mean, look at us as grown-ups. If we are going through some stress and somebody comes to us and says, अरे यार इसमें क्या स्ट्रेस की क्या बात है, इसमें चिल करो ना, ये तो ऐसा तो दूसरों के साथ तो ये हो गया है, आपके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कुछ भी नहीं है, डोंट फॉरगेट इट. We mean it in a good way, but the person who's undergoing the stress feels very small because उन्हें लगता है कि मेरा स्ट्रेस मतलब कुछ है ही नहीं, whatever I'm feeling is not important. So it's important to validate your child's feelings. What you're feeling is real. What you're feeling is correct. Okay? And how you deal with stress for children is by making them feel secure. It is the most important thing. You make them feel secure because you cannot protect your child from everything. वो क्लास में भी बुली होगा, भले ही 4 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, बुलीज भी उसको मिलेंगे लाइफ में. ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो बिल्कुल ही बुरा कुछ बोल के चले जाएंगे, झगड़े भी होंगे. They'll make friends, then they'll, you know, break up with those friends, they'll make new friends. These kind of ups and downs will happen in their lives and वो ज़रूरी भी है because इसी से उनको life lessons मिलते हैं. So that's also important. You cannot tell them, I feel that, like for example, your child is having a problem with a friend in class. It's really stressing them out. कि वो लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, nobody talks to me, I don't have good friends in school and there's a lot of groupism happening. So I feel that instead of telling them step by step what to do with those kids, it's important to sort of, make them understand what to do themselves, to make them equipped with the correct skills to handle situations like that. Because ये एक situation है, कल को 50 situations और होंगी. So to make them feel secure so that they don't get hassled by these things. They're not insecure कि अरे मुझसे कोई बात नहीं कर. They're secure कि ठीक है, कोई बात नहीं. That sense of security, that sense of feeling in them comes from a lot of love, from from understanding, from the understanding of the child कि मैं जो भी कर रहा हूँ, my parents are with me. मेरे को हर बात में डांट नहीं पड़ेगी, हर चीज में डांट नहीं पड़ेगी. वो कॉन्फिडेंस बच्चे को होना चाहिए कि मेरे को डांट तभी पड़ेगी जब मैं कुछ गलत करूंगा. Everything is not a no. This is another mistake that I've seen parents make. हर चीज के लिए no. Mama, can I drink a Coke? No. Can I have an ice cream? No. Can I have a pizza? No. Can I have Maggie? No. सब चीजें खराब है तो हर चीज में नो 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 नो. मैं उसके घर चला जाऊं, नो. पहले होमवर्क करो. मुझे स्विमिंग नहीं सीखनी है, सीखो. We put so much pressure on the kids that they somewhere start losing their confidence in us as parents. So I think all in all, I would like to say that it's important to be a friend to your child and understand the child as per their age rather than expecting the child to understand you, because वो कभी नहीं होएगा. हम 80 साल के हो जाएंगे, वो चीज कभी नहीं होएगी. हमको भी आज भी अपने पेरेंट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है ना. पेरेंट्स को लगता है कि हम उनको समझते नहीं है, हम उनकी बात नहीं मानते. That is always going to be like that. What else, Hanika? Yes. Thank you, Chhavi. Our next question is how to teach children's like हम लोग हमेशा ये चीज फेस करते हैं, हम उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, they don't follow that, या फिर बच्चे मनमोजी होते हैं, उनका मन करेगा तो करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर you cannot force them. So what are your thoughts and what are your experience on this? So again, I just again want to say that why do you want to force them? Don't force them ना. हमने भी अपने दिमाग में चीजें एक notions बना रखे हैं कि ये चीज करनी जरूरी है. And I see so many parents who say कि इस एज में तो पेंटिंग भी सीखनी चाहिए, उसको डांस भी सीखना चाहिए, उसको कराटे भी सीखना चाहिए, उसको स्विमिंग भी सीखनी चाहिए, फुटबॉल भी सीखनी चाहिए, सब कुछ सिखाओ ना. सारे स्किल्स सिखा दो बच्चे को. और बच्चा मना करता है तो हम सोचते हैं अरे मना क्यों कर रहा है, वी फोर्स, ये बात नहीं मानता है हमारी, क्या करूं मैं, मेरी बात ही नहीं मानता. अरे आपकी बात ही इतनी अनरीजनेबल है,
आपको मैं बोलती हूँ, अगर बोलूंगी कि आप खाना भी बनाना सीख जाओ, आप डांस करना भी सीख जाओ, आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू कर दो ना। सब लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आजकल, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी करो। एमबीए क्यों नहीं करी आपने? एमबीए करो जाओ। ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ ना। हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है, एंड नो मैटर हाउ स्मॉल योर चाइल्ड इज, he or she also has his own interest, and these interests for them will change. And trust me, when they want to do something, that is when they are ready to do it. जबरदस्ती तो आज तक कोई कुछ नहीं सीखा है। तो कभी जबरदस्ती तो करना ही नहीं है। मतलब आई एम सेइंग ये क्वेश्चन ही गलत है कि मेरी बात नहीं मानता। ये क्वेश्चन ही गलत है। उसको लाइक टेल यू समटाइम्स आई फील दैट एज अ पेरेंट आई लर्न सो मच फ्रॉम माय 4-year-old. His answers are so simple. Like he really simplifies life no end. अगर उसको आप कुछ खाने को दोगे और वो नहीं खाएगा और आप उससे पूछो क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं खाना? उसका जवाब होता है आई डोंट वांट टू। खत्म, सिंपल। तो उस चीज को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। हम लोग भी अभी, कोई कॉफी पीता है, कोई चाय पीता है, आप किसी से पूछ सकते हो कि अरे आप कॉफी क्यों नहीं पीते हो? कोई रीजन है उसका? रीजन क्या, उसमें रीजन क्या है? आई डोंट लाइक इट, फिनिश्ड। तो अपने बच्चे को समझो and understand that if he or she is not doing something, there is no point in forcing them. You have to understand yourself that my child is not going to do this and make peace with it. I know as parents हमारे बड़े aspirations होते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, वो करेगा, सब कुछ. But you have to understand that they have their own lives. They are born with their own destinies. They will make a destiny for themselves. We as parents are just there to protect them, to guide them, but not to force them and to decide for them. Decision उनका खुद का होना चाहिए हर चीज का. And I firmly believe that because the more decision making power you will give to your child, the more independent person you are raising. तो बड़े होकर जब जो हम लोग, you must have met a lot of people in life, कुछ होते हैं जो डिसीजन ही नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं, उनको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ यार, मुझे ये बिजनेस करना चाहिए कि मुझे वो बिजनेस करना चाहिए, मुझे ये भी ठीक लग रहा है, वो इंसान ये बिजनेस कर रहा है, उसका बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन वो इंसान ये बिजनेस कर रहा है, उसका भी बहुत सक्सेसफुल है, तो मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? ये जो कंफ्यूजन होता है ना, ये उन अडल्ट्स में होता है जिनको एज अ चाइल्ड डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी जाती, जिनके पेरेंट्स उनके लिए हर चीज डिसाइड करते हैं। आज तुम बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, ये पैंट पहनो, ये शर्ट पहनो, ये ड्रेस पहनो। आज तुम यहाँ जा रहे हो, उनको ये गिफ्ट दो, इसको इस गिफ्ट रैपर से रैप करेंगे, आज खाने में ये खाओ। सो इनिशियली एज पेरेंट्स वी फील कि इजी है हमारे लिए, भाई बच्चे पे छोड़ दिया, माय 4-year-old, इफ आई लेट हिम डिसाइड व्हाट टू वेयर, ही टेक्स हाफ एन आवर एक्स्ट्रा, इट्स अ लॉट ऑफ हैसल इन द हाउस, लेट हो जाते हैं, बट in the long run, for his growth and development, it's very important for me to let him choose. So I let him choose, and not from now, I let him choose since he was 2 years old. वो जो भी निकाल के लाता है, चाहे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, चाहे वो पार्टी के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, I let him wear that because I want him to grow up as an independent individual, and I want him to grow up as somebody who understands that my actions have repercussions. कल उसका कोई मजाक उड़ाएगा स्कूल में, वो अपने आप सीखेगा कि ये चीज जो थी ये शायद ठीक नहीं थी, तो वो अपने आप उसको चेंज करेगा, रादर देन मी टेलिंग हिम कि ये ठीक नहीं है बेटा, व्हाइट शर्ट के साथ तो ब्लू जीन्स अच्छी लगेंगी, ये पहनो, ये मत करो। वो समझेगा नहीं, मेरा भी स्ट्रेस होगा, उसको भी स्ट्रेस होगा, एंड I'm refraining myself from teaching him a very important skill there. But by letting him decide with a simple thing as what to wear, I let him spread his wings and fly. Or what is to be eaten for dinner. The dinner में बेटा आज ये बना है, आपको क्या खाना है? That's a choice. I mean, I'm not saying कि you decide the menu, then we'll cook it for you. That's too much. But दाल है, पनीर है, पालक भी है, सैलेड है, क्या खाना है? Then he'll decide, ये खाऊंगा, वो खुशी से खाएगा। अगर मैं उसको बोलूंगी ये भी खाओ, नहीं, सैलेड भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, खाओ, तो वो ना ये खाएगा ना वो खाएगा, झगड़ा होगा, टैंट्रम होगा, इवेंचुअली खाएगा वही इवेंचुअली, क्योंकि मुझे लगेगा एज अ मदर कि अरे भूखा सो रहा है, खाने दो जो खाने उसको, right? So I can explain to him that the salad is important for you because it's healthy, it's fiber, it's
a wholesome meal, you need a little bit of this, a little bit of sabzi, a little bit of dal, little roti, rice. वो मैं समझा सकती हूँ उसको, लेकिन eventually decision उसका है. इसलिए I feel that as parents, somewhere we need to take a step back and understand our roles in our kids' lives. Our roles are just to be there like a guardian angel for them, not to decide anything for them. Decision तो वो खुद ही लेंगे अपनी life को क्या करना है. And a lot of kids go haywire also. They wavered a lot. Again, it is not the parents' fault. It is not the parents' responsibility either. You have to love your child. You have to be kind to your child. You have to understand your child as a parent, and you have to set them free so that they can fly. Okay, not try to force them. Yeah. Yeah, थैंक यू छवि. एंड आज और कुछ दिनों से जब भी हम लोग इस सेशन के बारे में बात कर रहे थे अबाउट पॉजिटिव पेरेंटिंग, जब भी मैं किसी भी मदर के साथ में कनेक्ट कर रही थी, उनका सीधा सबसे पहला सवाल मेरे पास आ रहा था, हमारे बच्चे फोन बहुत यूज करते हैं, हमारे बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, हमारे बच्चे हमेशा कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनका ये टाइम स्क्रीन टाइम कैसे रिड्यूस करूं. आई थिंक यहाँ पे हमारे पास सभी लेडीज दे विल अग्री विद दिस. मेरे पास कुछ ग्रैंड मदर्स भी हैं यहाँ पर, दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग. दे आर लाइक कि मेरे ग्रैंड सन, मेरे ग्रैंड डॉटर, वो मेरी नहीं सुन रहे हैं, मैं वो हमारे साथ बैठते नहीं है, वो स्क्रीन पे हमेशा लगे रहते हैं. छवि, इफ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस एंड टिप्स ऑन दिस. Yeah, that's a very good question because even I get that a lot. Firstly, my 10-year-old daughter started watching TV when she turned 7. For the first 7 years of her life, there was no mobile given to her, no iPads, no computer, no TV, nothing. My 4-year-old still doesn't watch TV. I will start introducing that in his life at the age of 7. And my 10-year-old today watches 1 hour of television every week. So when she wants to watch it, I let her decide what you want to watch. Of course, it should not be adult content, but whatever kids content she wants to watch, she can watch. How I did that, and why is it so important that we don't allow our children to watch so much screen time? And why do still children end up with screens is something I'll say now. It's not going to sound good, but I've heard a lot of parents also tell me कि यार मैं इतना बिजी थी, उसको मैंने कार्टून लगा के दे दिया तो मेरा काम खत्म हो गया. अरे मुझे खाना बनाना था यार, खाना बनाना था ना, किसी लंच टाइम हो रहा है, मेरे पास टाइम ही नहीं था तो मैंने उसको टीवी लगा के दे दिया. किया है कि नहीं आप लोगों ने? कितने लोगों ने ये चीज की है कि मैं बिजी हूँ, उसको फोन दे के बिठा दो. So that is a habit that we only give them. Now, how did I manage to not do it? Is when I have to cook a meal. जब मैं किचन में खाना बनाती थी, जब छोटे थे, छोटे मतलब दोनों इन देयर रिस्पेक्टिव एज जब छोटे थे, तो मैं उनको किचन में लेके जाती थी अपने साथ और मैं उनको किचन में एक्टिविटी देके बिजी करती थी. मैं बोलती थी ये धनिया लो छीलो, या ये मटर लो छीलो, या ये आलू है इसको बॉइल्ड है छीलो काटो, एक ब्लंट नाइफ देके काटो. They used to enjoy it. Why? Because they are getting to spend quality time with me. And trust me, every baby loves kitchens. Okay, खाना तो उनको लगता है कि मतलब गोद में चढ़-चढ़ के मैंने खाना बनाया बच्चों के साथ. They love to watch it. क्या हो रहा है? Then I would tell them, देखो अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी, या फिर चिड़-चिड़-चिड़ की आवाज आती है, जीरा जाता है उसमें, उसको हिलाओ, seeds turning color yellow. You entertain them like that so that you don't have to give them a screen. And why not giving them a screen is important is also because when you give them a screen, why is TV called an idiot box? It's called an idiot box because when you're the person who's sitting in front of the TV, his brain shuts down, he becomes an idiot. वो सिर्फ देख रहा है क्या हो रहा है. अब इससे क्या होता है कि आप स्पाइडरमैन जैसी पिक्चर जो देख रहे हो, उसमें कितने स्पेशल इफेक्ट्स हैं और उसमें कितना फैंटेसी है, उसमें कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है. बट द चाइल्ड डजंट नो इट. Child feels कि ये सही है, or you make them watch action movies and Avengers and all. They feel ये guns, ones, ये violence, ये सब real है, ये ऐसी होता है life में. They don't have any perspective and they learn by imitation. The only way to teach, you were asking me how to teach your child, it's the only way to teach them is by imitation. 7 साल की उम्र तक तो उनको कोई और तरीका है ही नहीं सिखाने का सिवाय imitation के. तो क्यों आप दिखाओगे कुछ भी कंटेंट? आपको क्या पता कार्टून में वो डोरेमोन जैसे कार्टून्स भी कितना चिल्ला चिल्ला के बच्चे बात करते हैं. इट्स सो अग्रेसिव. I don't want my child to talk like that. I will never let them watch this kind of content because that's not what I want them to imitate. I want them to imitate my language. I want them to imitate
my husband's language, my in-laws language. What are we teaching them? That is what I want them to learn. इसलिए important है. Plus उनका जो creative mind है, and till the age of 7, 5, 6, 7, बच्चों का जो दिमाग होता है ना, वो इतना डेवलप हो सकता है. आई मीन देयर इज नो एंड. हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो तो कुछ % तक ही डेवलप होता है एज पर आर केपेबिलिटी, क्योंकि हम उसको वहीं स्टंट कर देते हैं. लेकिन अगर हम बच्चों को अपने दिमाग से काम करने दें, लेट देयर क्रिएटिव जूसेस फ्लो, लेट देयर माइंड इवॉल्व. मैं बोलती हूँ कि वो ड्राइंग अगर कर रहा है तो वो लाल रंग के पेड़ बनाने दो उसको. आप ग्रीन क्यों बनाने हैं? क्यों उसको स्पून फीड करना है कि पेड़ तो ग्रीन ही होता है? यू डोंट नो व्हाट ही कैन इमेजिन. लेट हिम इमेजिन. आप टीवी दिखाओगे तो वो यही सब देखेगा कि पेड़ तो ग्रीन ही होते हैं, सब में ग्रीन ही होते हैं. उसके दिमाग में ग्रीन हो गया, वो एक पिक्चर बन गया, दैट्स इट. यू जस्ट एंडेड हिज क्रिएटिविटी देयर. खत्म ही कर दिया आपने. या अगर प्रिंसेस है, you tell a story to a child who's never seen a screen before in his life. 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे, उसने कभी स्क्रीन नहीं देखी. आप स्टोरी सुनाओ. उसमें आप बोलो कि एक राजा था, एक रानी थी, एक प्रिंसेस थी, उनकी बेटी थी, उसके साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. यू आस्क हिम टू ड्रॉ. टेल हिम कि आप ड्रॉ करो इसको. अभी जो भी आपको ड्रॉ करना है करो. You'll be amazed. 10 kids in the room will imagine the king, queen and princess differently. उनकी इमेजिनेशन में वो क्राउन नहीं होगा, वो इंडियन किंग नहीं होगा, वो प्रिंसेस में ऐसा सिंड्रेला जैसे कपड़े नहीं पहने होंगे, वो जीन्स और शर्ट भी पहन सकती है. वो उनकी इमेजिनेशन है. लेकिन हमारी इमेजिनेशन इतनी स्टंटेड है कि आप हमको बोलो प्रिंसेस की फोटो बनाए तो हम सबसे पहले सिंड्रेला दिमाग में आएगी, स्नो व्हाइट दिमाग में आएगी, हम ड्रेस बनाएंगे और वो बड़े बड़े फ्लावर्स और लंबे लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें, वो सब बनाएंगे. प्रिंसेस सुंदर ही होती है. किसने बोला है सुंदर होती है? यार आपकी इमेजिनेशन में नहीं है सुंदर, बॉयकट है उसका. उसमें क्या है? That's why limiting screen time is extremely, extremely important. And also, another mistake that we make is कि हम लोग खुद अपने फोन पे इतना बिजी होते हैं. आप बच्चे को कैसे सिखाओगे कि फोन में नहीं घुसना है? How? Again, you have to lead by example. If I'm constantly on the phone and I'm telling them, हाँ, my son is talking to me, I'm like, हाँ बेटा एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ क्या बोल रही हो? अच्छा ओके, हाँ एक सेकंड, ना जरा ये important. No, what are you doing? I think you decide as per the routine that you have set for your child. You decide what time are you spending with the child at home, especially for working mothers. कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो? उस टाइम पे आप फोन, गैजेट, टीवी सब साइड में रख दो. Spend time with your child. I'm saying you don't have to spend, and especially for working mothers, you don't have to spend 12 hours a day with your child, 10 hours a day. Spend 2 hours, spend 1 hour, but make it count. Make it quality. Listen to the child. Don't talk. Listen to what the child has to say to you. Understand your child's emotions. Play with them. Make them do physical activities with you. Don't tell them कि अरे ये गेम मैंने लाके दिया, आप टीवी क्यों देख रहे हो? मैंने ये गेम लाके दिया ना, गेम खेलो. No, you play the game with the child. You play. मैं अपने बच्चे का ऊनो खेलती हूँ. आप 4 साल का है, आप उसको ऊनो में हरा नहीं सकते. But I play with him and I lose with him no matter how hard I try to beat him. He beats me every time. He plays so well. और उसको इतनी सेंस नहीं है कि छुपा के खेलना होता है. वो पत्ते भी दिखा देता है ऐसे ऐसे करके. So yeah, and then gardening. Gardening is something which I totally swear by. You do a lot of gardening with your children, especially small children. The impact the mud, the soil that has on your soul when you put your hands in it. It's something I cannot explain, and children love it. And don't tell them गंदा मत करो. गंदा करने दो उनको. कपड़े पहना दो ऐसे जो गंदे करने में प्रॉब्लम नहीं है. बाहर बिठा दो, बाद में झाड़ू कर लेना, कोई बात नहीं. मेरे पास लिटरली इतनी सी बालकनी है. बॉम्बे में तो छोटी-छोटी बालकनीज़ होती हैं हमारे. पर वो पूरा मेस करते हैं मेरे बच्चे वहाँ पे. मेरी बेटी ने अपने लॉकडाउन में भिंडी उगाई थी, टमाटर उगाया था, नींबू भी उगाया था गमलों में. पपाया का भी पेड़ लगा दिया था गमले में, जो बढ़ नहीं पाया आफ्टर अ पॉइंट बिकॉज़ बालकनी है. मैंगो भी ट्राई किया. ये सब उसने किया लॉकडाउन में, एंड आई डिड इट विद हर बिकॉज़ आई डोंट वांट हर टू वॉच टीवी. इवन आई डिडंट लेट हर वॉच टीवी इवन इन द लॉकडाउन. I mean, not so. Again, the 1 hour of TV in the week was allowed to her, but उसके बदले मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ जब तक मैं उसको नहीं दूंगी. So I think being a parent is a full-time job. Don't get psyched with it कि अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, मैं तो पेरेंट हूँ, मेरा तो फुल टाइम जॉब है. ऐसा भी नहीं है. You are a human being first.
You are a woman first. You have your own needs. You have your own interests. You keep them also in account. I mean, account for them also. But remember that as a parent, it's a full-time job. You have to give commitment to your child if you want to expect commitment in return. Thank you so much, Chhavi, for sharing your experience and your tips. We have first question from Forum Shah. For nowadays, teenagers going on diverted track like love affair, crush, and such diverted from and get diverted from study. So, how to keep them away from it? I think यहाँ पे शी वांट टू नो कि उनको डाइवर्जन हटा करके उनको उनके करियर और उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये चूज़ करने में उनकी किस तरह से मदद करे? Okay, that's a very difficult question to answer, and I have very progressive views on that. मेरा व्यू ये है कि उनको क्यों रोकना है? आप मुझे बताओ, आप जितना किसी को रोकोगे, again I'm coming back to the same point that you cannot force them to do anything. Very, very important point, and this is something we as parents have to understand. और आप मुझे बोलो कि आपको अगर मैं ये आप में से मतलब अगर आप किसी को बोल दो कि आपको सिगरेट नहीं पीनी है, सिगरेट मत पियो। वो इंसान 24 घंटा यही सोचेगा सिगरेट, 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 सिगरेट। उसको पहला मौका मिलेगा वो सिगरेट पिएगा। आप जितना रोकोगे अपने बच्चे को कि डोंट मीट दैट बॉय, डोंट मीट दैट बॉय, वो उतना ज़्यादा आपको मतलब हमारे बच्चे हमारे बाप हैं आज की डेट में। वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे और उसमें हार्म ये होगा कि अब वो जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता तक नहीं है। दैट इज़ व्हाट इज़ डेंजरस। दैट इज़ व्हाट इज़ डेंजरस। यू कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम हैविंग एन अफेयर, बट यू कैन स्टॉप देम फ्रॉम नॉट टेलिंग यू। You have to encourage them to tell you and talk to them as a friend. Give them your advice as a friend. Be mindful of what they are doing. अगर आप बोल रहे हो कि ठीक है, she's going on a date, you're being very progressive, and I know it's very hard as a mother कि my daughter is going alone with a guy, I don't know who that boy is and all of that. Be mindful where she is, but don't stop her. But educate her. Educate her. That is important. बट आप जितना उसको मना करोगे वो उतना करेगी। मैंने भी किया है अपनी लाइफ में, मेरी मॉम ने भी बहुत मना किया है मुझे, लेकिन जितने मुझे बॉयफ्रेंड्स बनाने थे मैंने बनाए और जितना उन्होंने मना किया उतना मैंने किया। एंड नॉट एवरीबडी इज एज लकी कि कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट एज अ पेरेंट इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर दैट यंग अडल्ट टू हैव अ फ्रेंड इन हिज और हर मदर एंड फादर। वो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Did I answer the question? Forum, Yeah. you can unmute yourself. Yeah, and we are actually doing that thing. We are very friendly with our both kids, but the nowadays scenario is a bit different. They don't know about all this, but they are listening from the other friends and all. And nowadays they are getting attracted. What is a crush? They ask me, Mama, what is a crush? What it means? And Or if you are not audible, if you can repeat yourself again. yeah, actually, we are very friendly with my both kids. But nowadays, it happens like what that kids are getting away from the other friends and all. That what in the Insta what they're going on. Even yet, I have not introduced my both kids with the mobile also. They are in the eighth now. But then too, if not necessary, then no need. And where you all knows that we all have mobile shops. Then too, necessity hai, I know that. But where you need, you can take mobile and go. But if you don't need, then don't take whole day and just sit. That is a part. But nowadays they come and ask, Mama, what is a crush? One guy told me I have crush on you, but they don't know only what is this. So how to get apart from that or differ from that? So I want to know, Forum, how old are your kids? They are in the eighth standard, eighth. Okay. So they are in the eighth standard. So काफी मतलब their
at the right age, I feel, firstly. Children are inquisitive. They've attained their puberty. They are at the right age to be inquisitive about these things. It is the way God has made human beings. It is the way God has made us. You cannot curb that. And I think it's a great thing. I congratulate you on that, that your children are coming and asking you what is a crush. They are asking their mother. They trust you so much. They have confidence in you that you are going to tell them the right answer. That is great, because that is your biggest problem, which is already solved. अब आप उनको जब जवाब दे रहे हो, तो आप उनको इस तरह से जवाब मत दो कि ये कोई गलत चीज है। क्रश होना कोई गलत चीज है, कोई गलत चीज नहीं है। हमको भी सेलिब्रिटीज पे क्रश नहीं होता है क्या? You see a very handsome looking actor on screen, you have a crush on them. There's nothing wrong in it. So let's not tell our children that, oh, it's wrong. It's okay. When you find somebody attractive, you appreciate them, and that is what a crush is. That's okay. And sometimes when it's mutual, you start seeing each other. There's a relationship, and at their age, it doesn't. There's nothing. It's just like they're just testing waters, or kuch nahi hota uske aage. But I think the more you tell them that it's healthy, it's okay, the less they will want to explore. But the more you try to tell them ye galat hai, the more they will want to explore. My daughter, she's 10 now, but when she was 8 years old, she came and asked me, what is sex? Somebody told me, and she said some very graphic details she shared with me, because kisi friend ne usko bol diya kuch. Now friends भी जो हैं, आपके friends बच्चों के जो हैं, वो कुछ बच्चों से छोटे होंगे, कुछ उनसे बड़े होंगे उम्र में। जो बड़े बच्चे हैं, उन्होंने ज़्यादा दुनिया देख ली है, और वो तो बहुत इंक्विजिटिव हैं, वो तो झंडे गाड़ चुके हैं। वो आपके बच्चों को क्या-क्या बोलेंगे, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। प्लीज़ डोंट इवन ट्राई टू कंट्रोल दैट। डोंट कंट्रोल इट। दिस इज़ हाउ वी ऑल लर्न्ड, डिडंट वी? डिड वी नॉट डू ओके? या हम बहुत बिगड़ गए? ये चीज़ें हैं, वो तो सीखते ही हैं बच्चे। वो उनका ग्रोथ का एक प्रोसेस है, सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल दैट। But as long as they are talking to you about it, everything is good. That is what you have to encourage. You should know, as a parent, you should know what all information your child is collecting from everywhere. Your child should come, रात को एक routine बना लो बच्चे के साथ, कि रात का आधा घंटा, 1 घंटा बेड टाइम से पहले, you're going to tell me about your day, I'm going to tell you about my day. I do that with my daughter. आपके साथ क्या हुआ स्कूल में आज, किसने क्या किया, किसने बुली किया, स्कूल होमवर्क में क्या हुआ, टीचर ने क्या बोला, कौन रोया, सब मुझे बताओ। देन आई ऑल्सो टेल हर, ऑफिस में ये हुआ, एडिट पे ये प्रॉब्लम हो गई, आज वीडियो अपलोड नहीं हुआ, आज स्क्रिप्ट में हमको इतना टाइम लग गया, आज मेरे सर में बहुत दर्द था, मैं सो गई। आई टेल हर एवरीथिंग अबाउट माई डे, शी टेल्स मी एवरीथिंग अबाउट हर डे। वी डोंट जज ईच अदर। इवन इफ शी सेज समथिंग व्हिच आई फील, ओ गॉड, ये कैसे हुआ, आई डोंट से एनीथिंग। लाइक one day she came and told me that, uh, what did she say? Something about a boy, she said in her bus, that he keeps saying Ariza, Ariza, and then everybody says, oh, you know how कि वो लड़का है या लड़की पसंद है इसको, छेड़ते हैं उनको basically. So when you don't know what to say, just ignore it. Like it's not important. Like you didn't find it fascinating enough, so it doesn't require your reaction. So next time she'll also feel that इसमें तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं, मम्मा ने तो रिएक्ट ही नहीं किया, कुछ भी नहीं है, तो ऐसी है, कुछ नहीं। She'll forget about it. But if you say, कौन था, कौन है, who, which boy, what were they saying, why were they saying, oh, why were they saying, what, did he say something to you, does he like you, बस आपने वहीं उसके दिमाग में कीड़े डाल दिए। So you have to know as a parent where you need to take a back seat, when you need to shut your mouth and expert advice, वो चीज आपको डिसाइड करनी है। और जब तक आपका बच्चा आपके साथ शेयर कर रहा है, everything is good. That is what your aim should be. Your child should share with you. You should know what is happening. That's it. Right. Thank you, Chhavi. I think you are right. Talking to your children and knowing about them, what they are doing and where they are is more important, along with educating them, right? Okay. So next question we have from Soumya. Soumya, you can unmute yourself. Hi, Chhavi. Thank you so much for your valuable inputs. It's been very informative and you're explaining it in a very simple and cute way. So thank you so much. So दिमाग में बहुत कुछ जा रहा है. So thank you for that. And my question is, मेरा लड़का, he's 13 years. तो उसका ये मानना है कि
he's not a person, if I tell him to go for any classes, वो जाएगा. तो पर वो ऐसे सीखेगा कि वो उसका वीडियो देखे, उसका पूरा, he wants to छानबीन करके, and he feels technology is helping him learn about it. तो how then would I be able to control his screen time? वो जब भी देखता है, ऐसा नहीं कि हर बार he is seeing only about about good things. So sometimes it's also entertainment. Sometimes it's just few reels, or sometimes it's few cartoons or few things like that. But most times it's also about science or about what's happening in the current affairs and things like that. So then I feel guilty about stopping him from learning. So how do I manage that kind of a feeling? Am I right, or should I stop him? So I feel, in my opinion, a 13-year-old child today, uh, there's no problem in the screen time that he's getting, unless he's watching something totally which is a waste of time, and he's only doing that. So if he's learning, I feel nowadays with AI developing so much, and you have Chat GPT and this, that, and the other, it is also important for children their age to be up, with the times, right? Yeah. So वो चीज भी जरूरी है. अगर वो सीख रहा है तो अच्छा है. And if you feel that other than that you want to limit his screen time, so rather than telling him not to watch, rather than maybe you can just ration his time, or maybe you can start including him in your own activities. Like a lot of times I like to bring my kids on set and ask them their opinion. Like I literally ask my 4-year-old that I'm saying this, what do you think I should say instead? I know he's not going to have anything valuable to add to it, but I say it because I want him to get involved in it and have fun while doing it. So whatever activity you're doing, whatever your line of work is, maybe just discuss with your son, and because he's 13, I'm sure he's intelligent enough to have an opinion about whatever you say. And the kids amaze us sometimes with the kind of opinions they have. Like my 10-year-old points out things which really miss many times. So, like you said, my son is more educated than me in so many other aspects. So it's still okay then that I continue his indulgence in phone and screen time, right? Yeah, absolutely. I think as long as he's learning as well, there shouldn't be a problem. And doing other things also. That should not be the only thing he's doing. Everything like entertainment is also on screen, learning is also on screen. That is not okay. Divide the time. Let him do other things also. Yeah. Thank you so Right. much. Thank you, Soumya. Thank you, Chhavi. We have next question from Hajira ji. How to manage a 9-year-old boy from learning bad words from other children at school, outside, and saying the same in front of their younger brother and sisters? Okay, that's an interesting question. Once you find the answer, please tell me also. Because my daughter is learning bad words from kids in school. So very, very confused. No, but jokes apart. See, what I do is when my daughter came back home with the F word, I didn't make a big deal about it. मतलब आप जितना it's like बच्चों को attention चाहिए, not just बच्चों को, बड़ों को भी attention चाहिए. No matter what you say, everybody is an attention seeker. Whatever gets you attention, you're going to do more of that. कि हाँ, मैंने जोक मारा, सब हंस रहे हैं, अब मैं ये जोक दूसरे ग्रुप में भी ट्राई करता हूँ, वहां भी हंसेंगे. तो आप अटेंशन मत दो उसको. उसने कोई गंदा वर्ड बोला, आप अटेंशन मत दो उसको. और आपको मतलब इग्नोर एज इन everybody should ignore it. Just it didn't happen. It was so minuscule. It didn't happen. फिर भी अगर हो रहा है दोबारा तो just gently tell him, listen, don't use that word. They are small. You're big. They're small. Don't say it in front of them. Let them grow up. बस धीरे से बोल दो. मगर ज्यादा आप बोलोगे, अरे क्या बोल रहे हो ये, ऐसे नहीं करना, the bad word. बस फिर उसको लगा ये cool है, because kid want to behave like grown ups and he'll feel I'm a grown up. This is what gets me attention. I'm going to go try it everywhere. I'm so cool. वो नहीं करना है, उनको subdue करना है basically. All right. Thank you, Chavi. We have next question from Deepa ji. How to stop junk temptation? Junk. Yes. Oh, you tell me, how do you stop your junk temptation? I don't know. My kid, hi all. I think this is the problem with all the moms. My son, he's 12, and earlier he was like a pakka home baby, home food material. Now he's growing, he has got tantrums. Mama, he's attractive to a junkie, he wants momos. He don't like chow mein earlier. Now he says, I'm ready for chow mein. I'm ready for momos. I'm ready for everything, every new thing which comes on the platter served in the restaurant. And it's a big deal for me.
what to cook at home, which emphasize satisfies his taste bud. It's Right. a big deal for me every time now. Right. So I feel this is how I handle it at my home. Mhm. Ariza also, my daughter who's 10 now, she's also picking up this thing. And I feel in my head, sometimes I feel it's not that she likes that food. It's just the peer pressure. Because she goes to school and friends say ki I went to XYZ place. She suddenly started enjoying sushi. Why? Because two of her best friends said, "Oh, Fu is such a cool restaurant. They have amazing sushi." These are little grown-up kids. So how do you tell her? You can't just say ki अरे अरे वो तो शो ऑफ कर रहे हैं आप आपको क्या फर्क है you can't say these kind of negative things to them you know it but you can't say them so what we do is we tell her that like school days home food weekends your choice so if you are eating home food when you are eating my choice then I will let you eat your choice so it's a two-way street because and then I explain to them why junk is bad what is it doing to your body like get into the gory details of it so that it gets into their brain that this is what's happening when you're having a pizza there's cheese in it there's ganda wala ghee in it there's ganda cheese there's maida in it and there's these vegetables they've been cut the whole day they've been flies sitting on it and then they put it in the oven and it's not healthy it's going into your body your stomach is absorbing it it's going into your veins it's not doing good to your body I explain to them and then I tell her your choice eat what you want I'm telling you 80% of the time she'll say acha theek hai okay then what else you tell me You really think it works? You really think it works? As for my son, he actually they are tech savvy. I just took out the reel, I just forward him and make him sit. If you eat momos, your body will become momos. And he saw, and the second day he said, no, momo is not good. We're selling, Didi, we can have one. Huh? And he started eating on the next time itself. Like these boys, tackling with boys, ये say mama ऐसा कुछ नहीं होता है. These all are तो this, आप ऐसा करो ना ऐसे केस में like if Aram is like that my son you're right boys it's a little difficult to tackle boys so Aram is like that he has a sweet tooth and I did not give him any sugar by the way he's 4 I've never given him sugar I don't know which birthday party he got the taste of it and he just got addicted to it like cocaine and my daughter I didn't give her sugar she was more in my control today she goes to a birthday party cake is the only thing she refuses she says it's too sweet I don't want it so Aram को मैं क्या करती हूँ I tell him you want this you first finish this you finish this you can have that and I have no problem then he's eating my healthy food he can have the junk no problem कि आप पहले मेरी ये पालक पनीर खाओ उसके बाद आपको बर्गर खाना है मोमो खाना है आइसक्रीम खाना है जो खाना है खाओ नो प्रॉब्लम चांसेस आ उसको भूख ही नहीं रहेगी वो थोड़ा खाएगा and chances are that boys are also more I think their appetite is also better their taste buds are also better they are not that fussy chances are he'll enjoy the palak paneer also उसको वो भी अच्छा लगेगा उसके बाद और उसको इतना मन कर रहा है मीठा खाने का तो खा लो उसके बाद नो प्रॉब्लम खाओ so I also get my say he also gets his say and everyone's happy Nini, the problem is not that. He's a very healthy kid. He will eat salads. He asks for fruits. He asks for salad. He asks for proper. But at the same time, he has the urge. yeah, so then that's okay I don't see that as a problem Saturdays, Sundays. My God, he knows Papa. It's a time for out. so come on I think that much should be allowed if he's eating But healthy food actually, and it was salads never and all with me, it was a planned thing. Earlier, Daksh means homemade food. Now it means he knows everything, that platter. Arey, pura veg platter leke aao, with अरे everything, seek खाने दो ना kebab. एक दिन तो हमारा भी चीट डे होता ही है ना तो करने दो उसको एक दो दिन चीट डे इट्स फाइन as long as he's eating healthy food not just eating junk नहीं, it's he's a healthy kid. He's good more into things. वो issue नहीं है. बाकी और one more issue है. One more हाँ issue. He's very fond of these, that playing games, that boys games, the screen time. that is And a it's problem very difficult for me now. After Corona, it's really difficult for me because everything, the French class is here, all that, virtual classes. So he's used to it. He studies well, he plays well, no complaints. But at the same time, he's very fond of screen. Matlab, addicted actually. Again, that is a very problem difficult for me. It's very difficult for me. yeah That's the thing is hit no, me, so he's also at that age no that it's difficult to explain to them now so what happens is that हम लोग एक चीज अगर कई साल तक allow कर देते हैं
Suddenly it's not fair for us also to expect them to now not do it. So Right, that right. ठीक है, कोई बात नहीं. I mean, that is a mistake which was made by a lot of parents during the lockdown, because I understand everybody was under a lot of pressure. This is not something anybody is prepared for. So everybody made all kinds of mistakes, including me and my husband. वो होता ही है. But जितना salvage कर सकते हो करो, जितना नहीं कर सकते हो, don't stress yourself so much is what I'll say. Yeah, right. Thank you. Thank you, Deepaji. I think you are right, Chhavi. You can negotiate with your children what you want and what they want. On this basis, आप दोनों you can be on the same page, right? Yeah. Next question we have from Kanika Arora. Kanika ji, you can unmute yourself. हेलो हनिका मैम, हेलो छवि मैम। Hi. छवि मैम, मुझको ये पूछना था अभी, जैसा कि बताया मैं वर्किंग हूँ, तो अभी थोड़ा सा क्या है, जब भी मेरा एक लड़की है 7 ईयर, ठीक है। अभी जब तक है 7 ईयर तक कोरोना, जब तक लॉकडाउन चल रहा था, तभी क्या हुआ आपको पता है, स्कूल्स की वजह से हम लोग को उसको लैपटॉप वगैरह ये देना पड़ा। मैं जब तक घर पे होती हूँ तब तक वो नहीं देखती, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा घर से ये सुनने को मिलता, नहीं वो देख रही है। तो अब मुझे ये कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूँ, कुछ टाइम के लिए मैं ये अपना वर्क छोड़ दूँ और उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ, कैसे मैनेज करूँ? So आप अकेले हो? What about your husband? He is also not at home. Your other Husband? family in-laws or something? मदर इन लॉ है, वो देख रहे हैं, लेकिन अब मेरा बेटा था, तब तक का बेटा बहुत शाय है, वो ये सब चीजें, वो लैपटॉप वगैरह नहीं देखता, लेकिन वो इतनी एक्टिव है कि उसको हमेशा वो यूट्यूब देखना, रील्स देखना। अभी वो बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी अब मुझे मतलब इतना पहले नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, लेकिन अब सब लोग घर पे बोलते हैं कि नहीं थोड़ा सा घर पे टाइम दो बजाय इसके। तो कैसे अच्छा, मैनेज करूँ? आप बाहर जाते हो जॉब के लिए, you're not working from home. So firstly, Kanika, I don't think it's your responsibility alone. Please understand that. And if you can talk to them, you should talk to them about this first. That this is not your responsibility alone. There are other adults in the house. The daughter is equally their family member as she's yours. You're just because you're the mother doesn't mean it's your responsibility. You're a working mother. So जितने आपके husband भी working होंगे, तो आप और दोनों की सेम 50-50 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें 30-70 40-60 नहीं है, ये 50-50 है। आप भी बाहर जा रहे हो, वो भी बाहर जा रहे हैं, आप भी घर आ रहे हो, वो भी घर आ रहे हैं, बच्चा दोनों का है, साथ में मिलके पैदा किया है, तो उनको ब्रिंग अप भी साथ में मिलकर ही करना है। सो यू व्हाई शुड यू स्पेंड टाइम एट दिस? दीज आर माय व्यूज that I feel very strongly about it, that why are women expected to raise the child? Why the man is not expected to do the same responsibility? I'm not saying more, but same तो करो। तो या तो दोनों आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि एक दिन मैं घर जल्दी आऊंगी, एक दिन आप घर जल्दी आओ, एक दिन आपकी मंडे फ्राइडे वेंसडे जो भी दो दिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर हर दिन मैं कैसे काम छोड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट अ फेयर डिमांड ऑन यू। Secondly, you can also try talking to your daughter. This happened with me during the lockdown also. जब क्लास के बीच में वो कुछ YouTube लगा के बैठ गई थी. I had a very long conversation with her. She was 7 or 8 at that time. I explained to her that, beta, when you do this, when you do something which you have been asked not to do, you're doing it on the sly, you're breaking our trust. And trust is something which is, once it's broken, it cannot be mended. So when I tell you that I'm going to office, I trust you that you will not watch. You will do something else. But at the same time, if you want to watch, call me and ask me. I want to watch and I will tell you to watch. I will not say no. But don't do it without my permission. Ask me. I never say no to you. You ask me, I will tell you कि अभी देख लो, 1 घंटे बाद बंद कर देना, आधे घंटे बाद बंद कर देना, ये कर लो, होमवर्क कर लो, ये कर लो, जो भी। But let me do that for you. You don't do it like that. It made a lot of sense to her. She did not watch anything after that. Even today, even if a friend sends her a link कि ये dance हमको सीखना है, perform करना है, she sends me the link and tells me ये मैं open करूं कि नहीं करूं. I explained to her that there's a lot of phishing happens on the internet. You cannot click on a wrong link. कुछ भी हो जाता है. I told her stories of what all happens. So I said, you have to ask me before clicking on anything. So she always sends me a link and says कि ये मैं कर लूं click, फिर मैं click करके check करती हूँ, and I say हाँ ये कर लो click, या ये मत करो. Then there are no questions asked. वही मुझे लगा कि मैं उसे या तो थोड़ा टाइम दूं, वर्क को फिर यहाँ छोड़ूं और उसको टाइम दूं.
No, I don't think you should quit your job. Firstly, this is my opinion. I mean, you're free to make your own decision, but I feel that you will not be happy if you quit your job. You will not be happy, because I think for every person, man or woman, it's very important to spend some time away from home doing what you do as an individual, which doesn't have your family, which doesn't have your responsibilities, which has you as a different person, and then you go back home to your family. I feel that these two things are important aspects of everyone's life, and everyone should have a right to decide what they want to do. Nobody should decide that for you, not your husband, not your parents. Only you should decide it. Thank you, Chhavi. Thank you, Kanika ji. Let's wrap up this session. आप लोगों के पास I'm sure और भी सवाल होंगे. We have next session on 30th. हम लोग 30th को फिर ज्वाइन करेंगे. आप अपने सवाल तैयार रख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और you can just write to me. I'll keep the list with me, and during the session, I'll present in front of Chhavi. And as a ritual, what we do, let's take a screenshot. Can you, everybody, just do the thumbs up, and I take the screenshot? Yes. Yeah. Thank you. All right. Yeah. Thank you so much, Chhavi, for this wonderful, informative session. I think we all enjoyed it. और आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, मैं वही जब सौम्या जी बोल रहे थे, उन्होंने बिल्कुल मेरे मुंह की बात ले ली कि आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, हम लोग जैसे बात करते हैं आपस में, अपने दोस्तों के साथ जिस तरह से बात करते हैं, आपने उस लैंग्वेज में हम लोगों के साथ बात की है और हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है. आई थिंक इसके बाद में मैं सब लोगों से फीडबैक जरूर लूंगी, आप लोगों ने अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम किस तरह से कम किया. And thank you so much, Chhavi, for your time. हम 30th को मिलेंगे. Till then, yeah, thank you. Till then, everybody, please don't forget to drop your feedback in the group. आप हमारे छवि के बारे में, इस सेशन के बारे में, हमारे प्रेसिडेंट्स क्लब के बारे में फीडबैक लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा. और हम लोग 30th को मिलेंगे सेम टाइम between 4 to 5. Thank you so much, everyone. Bye, Chhavi. Thank you so much. Bye. Have a good day. Thank you.